So it's a recap of what we did yesterday. Obviously, recap goes very fast. We have shared the recording in the group, right? So I'll share this recording as well. So what we did yesterday was that what is cell? So cell is something that is made up of a cell must have cell membrane. Kamil, ठीक है बेटा? Cell membrane, cytoplasm, and nucleic acid. So these three things are a must for something to be called cell. Got it? If there is anything missing, it won't be called cell. You understand my point? For something to be, we are having a recap for yesterday, from yesterday. फिर हमने पढ़ा था virus. Virus has just two things. Virus. You all must have heard virus, है ना? So virus has protein coat, protein cover, and nucleic acid. So Mr. Kamil, do you think virus is cellular? Do you think virus is made up of cell? Virus is not made. Why? एक चीज है, nucleic acid. For something to be called cell, these three are a must. Got it, na? So it's what? Non-cellular. सही बोल रहा हूँ? Then what we saw yesterday was कि जो organelles होते हैं सेल के अंदर जो चीजें हैं, organelles are the small structures found inside the cell. Some are membrane bound and some are membrane less. नहीं आ रही समझ? For example, inside cell, let me draw them. So you see some structures are membrane bound. For example, this is nucleus. So inside nucleus is what? You know what's there inside nucleus? Allah, nucleus के अंदर क्या होता है? Have you heard of chromosome, DNA? Have you heard of that? Chromosome सुना है आपने? Have you heard? तो उसी को nucleic acid कहते हैं. Look, for example, our cells, we are human beings. So inside nucleus of our cells, there are 46 chromosomes, 46 DNA. So nucleus के अंदर क्या होता है बेटा? न्यूक्लिक एसिड, इसको डीएनए भी कहते हैं. वेरी गुड, ठीक है. अच्छा, अब मैं एक और बनाता हूँ, उसका आप बताएं. व्हाट इज दिस? माइटोकॉन्ड्रिया, which is what? Which carries out Allah, respiration. Mitochondria, which is the powerhouse of the cell, right? It carries out respiration. And this one is the nucleus. It controls all the activities of the cell. Then there is another thing. If it were plant cell, plant cells have another thing. You know what is that? Chloroplast. Have you heard of chloroplast? It is through which plants make their food by photosynthesis. Kamil, what does chloroplast do? Yeah, by photosynthesis. Got it? Then there are some structures in the cell called Igcse. Vesicles, Hassan bhai, vesicles. And there are some structures, dot-like structures. They are called ribosomes, yeah.
So beta, ribosomes are membrane less. They do not have any membrane around them. And Kamil, chloroplast is membrane bound or membrane less? MashaAllah, two membranes. Beta, mitochondria is membrane bound, membrane less. देखो दो membrane हैं, 1 and 2. Inner membrane has folds. Any problem so far? Did you get it? बच्चों समझ आ रही है? तो कल हमने ये भी देखा था, अच्छा अस्सलाम वालेकुम, आप हसन उल आबिदीन, अच्छा आप हैं बेटा। राइट नाउ ये अभी मैं क्लास में सास की, मैं आपका ऑडियो मैसेज सुनता हूँ इसके बाद। सॉरी फॉर नॉट बीइंग एबल टू रिस्पॉन्ड यू। Okay, so dear friends, so there are some are membrane bound organelles, some are membrane less. You understand my point? Hello friends, do you understand what I say? Some are membrane bound, some are membrane less. तो कल हमने पढ़ा था कि दो तरह के सेल होते हैं, one is prokaryotic and the other is, यार इतनी खामोशी, चलो. So there are two types of cells, prokaryotic and eukaryotic cells. बच्चों, there are two types of cells called what? I want you to utter this, prokaryotic and eukaryotic. Yeah, prokaryotic cells, ये तो सारा recap चल रहा है अभी. And eukaryotic cells. जो prokaryotic cells है ना, they have no membrane bound organelle. No membrane bound organelle. This is their most important feature. ठीक है, और इनकी एग्जाम्पल क्या है? बैक्टीरिया. देखो मैं कल वाला रिकॉल कर रहा हूँ ना, तो मैं चाह रहा हूँ आप लोग मुझे बताएं. और यूकैरियोट्स कौन से होते हैं? दे हैव membrane bound organelle. अब मुझे बताएं बेटा, बैक्टीरिया में माइटोकॉन्ड्रिया होएगा? बैक्टीरिया इज अ प्रोकैरियोट या यूकैरियोट? ऊंचा बोले, लिखा हुआ है प्रोकैरियोट. Should do you think prokaryotes have membrane bound organelles? Yeah, it has two membranes. So it won't have it. Hassanul Abdin, welcome beta. We are just recalling what we did yesterday. Recap. Yes. So dear friends, their examples are animals, plants, fungi, animals, plants, fungi, protoctist. You'll do this later. What are they actually in detail? But they are all eukaryotes. They have membrane bound structures. Got it? अब मैं एक प्रोकैरियोटिक सेल बनाता हूँ like this. It's a bacteria. It has wall also. Hassan, I'm बताएंगे what is this wall made from? Hassan, आप बता सकते हैं what is cell wall made from? Hassan Abdi. PPG. You know plants का cell wall होता है नहीं होता? जो प्लांट सेल में सेल वॉल होता है, क्यों नहीं बोलते? वो किसका बना होता है? Cellulose. Cellulose. Have you heard of cellulose?
देखो मैं रास्ता बना लेता हूँ. If I draw a plant cell, it's like this: vacuole, nucleus, cell membrane, cell wall. It has chloroplast, mitochondria, ribosome, vesicles, vacuole. So vacuole is membrane bound or membrane less? Fahad Rahim ne hame join kiya. Welcome Fahad Rahim. So we are recapping what we did yesterday. We are here to talk that prokaryote and eukaryotic cells क्या होते हैं. सेल के जो ऑर्गेनल्स हैं, they are nucleus, mitochondria, chloroplast, vesicles, ribosomes. Of these all, vesicle, nucleus, mitochondria, chloroplast, and even vacuole, they are all membrane bound. They are all, Sanbhai, they are membrane bound. But prokaryotic cell is the one which does not have membrane bound organelles. Prokaryotes do not have membrane bound organelles. You understand my point? तो मुझे बताइए कि इसमें होएगा माइटोकॉन्ड्रिया? हसन, आई थिंक No, आप sir. समझ नहीं. हसन नवाज, मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ, prokaryotic cells, do they have membrane bound organelles? So should this have mitochondria? Yes or no? Nucleus, chloroplast. Why? ऊंचा बोले ना, प्लीज ऊंचा बोले. Because all nucleus, chloroplast, mitochondria, they are membrane bound or membrane less. Look, mitochondria में membranes है ना बेटा, दो. This one and this one. Yes or no? क्लोरोप्लास्ट में भी ये और ये मेम्ब्रेन नजर आ रही है. वेसिकल भी मेम्ब्रेन है, इसमें भी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है. नहीं समझ आ रही? तो प्रोकैरियोट्स में माइटोकॉन्ड्रिया होएगा? ऊंचा बोले ना प्लीज, ऊंचा बोले. नो, हाँ से लाउड. क्लोरोप्लास्ट, लुक, नो है ना, नो ना. राइबोसोम होंगे बिकॉज दे आर मेम्ब्रेन लेस. गुड वन. और इसके साथ ये मैं क्या बना रहा हूं, अस्सलाम वालेकुम फहद, did you come yesterday also, है ना? Sorry for disturbance today. Sorry बेटा. Till 5, 10 more minutes. Till 5. तो अब देखो प्रोकैरियोटिक सेल में एक और बात भी होती है. डीएनए सर्कुलर, राइट? ये सारा हमने कल पढ़ा, सर्कुलर डीएनए. कल मैंने पढ़ा था सर्कुलर मींस व्हाट? एंड्स आर The जॉइंट. ends are connected. या वेरी गुड, माशाल्लाह हसन. सर्कुलर डीएनए, गॉट इट. एंड देयर वॉल इज मेड बाय पीपीजी, नॉट सेल्यूलोज. अब देखो यहाँ पे यूकैरियोट्स में डीएनए क्या है? सर्कुलर है, लीनियर है ना? यूकैरियोट्स में लीनियर, Linear. स्ट्रेट. सर्कुलर मींस एंड्स आर जॉइंट. ये आपको डीएनए नजर आ रहा है ये वाला? इज इट सर्कुलर या लीनियर? लीनियर. तो यूकैरियोट्स में क्या होता है? मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर्स हैं और लीनियर डीएनए. लीनियर डीएनए. यूकैरियोट्स में मोर देन वन. लाइक इन आवर सेल्स हाउ मेनी डीएनए आर देयर? 46. सो मोर देन वन डीएनए. लेकिन प्रोकैरियोट्स में जस्ट वन डीएनए. So these are some differences. Only one DNA, and it is circular, and it has no membrane bound organelles. Prokaryotic cell, does it have cell membrane? Yes. Prokaryotic cell, do you think, do prokaryotic cells have cell membrane? Yeah, but they have no membrane bound organelles. Done? ये पॉइंट समझ आ रहा है आपको?
अब हमें हसन समझाएंगे जरा। हसन थोड़ा लाउड बताएं हमें कि व्हाट इज डिफरेंस इन प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल। आवाज नहीं आ रही, थोड़ा लाउड प्लीज, थोड़ा लाउड, एज लाउड एज जब आप गुस्से में बोलते हैं। मुझे बताओ, आप बहुत गुस्से वाले हैं, घर में लड़ाइयाँ होती हैं? आप बड़े हैं, सबसे छोटे हैं, छोटे बहन भाई हैं, तो उनको दबाते नहीं हैं?